अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में माहौलियाती तब्दीली और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में माहौलियाती तब्दीली और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से तमाम आलम को आगाह करेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी से इमदाद की अपील भी करेंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे, मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब भी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली इजलास से कबल आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और माइक्रोसॉफ्ट बानी बिल गेट्स से मुलाकातें की। सैलाब मुतासिरीन की मदद और तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील भी की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और माइक्रोसॉफ्ट बानी बिल गेट्स से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन की मदद और तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील की है। वज़ीर आज़म की तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के दौरे पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में कहा, सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी बरादरी की भरपूर हिमायत का मुस्तहिक है। UN सेक्रेटरी जनरल ने मुतासिरीन की बहाली के लिए आलमी हिमायत को मुतहर्रिक करने का यकीन दिलाया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरा खवातीन और बच्चों की हालत ज़ार का मामला उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब एक मौसमियाती कत्ल के मौजू पर तस्वीरी नुमाइश में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिकेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल मलिसा फ्लेमिंग ने कहा, मुश्किल सूरत हाल में हमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की इमदाद में आलमी बिरादरी ने खातिर ख्वाह हिस्सा डाला, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा है। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, इसमें इजाफा भी हो सकता है। जनरल असेंबली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की जापान और बेल्जियम के हम मनसब से मुलाकात में भी मौसमियाती तब्दीलियों और सैलाबी सूरत हाल पर बात हुई। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए भीख नहीं, मौसमियाती इंसाफ चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही को बयान करने के लिए तूफ़ान नू का हवाला दे दिया। कहा, सैलाब की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। भीख नहीं इंसाफ, बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में कौंसल बराए अमूर खारजा से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही को बयान करने के लिए तूफान नूह का हवाला दे दिया। कहा, हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए भीख नहीं, मौसमियाती इंसाफ चाहिए। But I don't want to beg for aid or for dole. I want justice for my people. I want climate justice. We want to be able to rebuild their lives and livelihoods in a just manner. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, सैलाब की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। इस सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। We were already engaged in very difficult negotiations with the IMF and had just reached our IMF agreement and were hoping to be able to enjoy a short space of economic relief. उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन की तादाद कनाडा की 95% आबादी के बराबर है। हर 7 में से एक शख्स सैलाब से मुतासिर है। 40 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई। खदशा है 2 माह बाद गंदम की बवाई भी नहीं हो सकेगी। We had 4 million acres of standing crop devastated. We fear that 2 months from now, when we were to plant our wheat crop, that now will not be possible. इससे पहले वजीर खारजा ने OIC वज़राए खारजा इजलास की सदारत भी की। कहा, हम तारीख के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस मौसमियाती तब्दीली ने अहदाफ की तकमील रोक दिए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा आकर दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। फौरी तामीर नौ की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूयॉर्क में NewsOne से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि करप्शन हो रही है। बहुत से ममालिक खुद इमदाद देते हैं, हमारा ताल्लुक नहीं होता। बरतानवी एज की तस्वीर वायरल की गई, लेकिन UK से तो आटा आया ही नहीं। तो UN में आके दुनिया को बता पाकिस्तान में फ्लड्स की क्या हालात है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। हमारा कोई कार्बन एमिशन तो अप्रिशिएबल है ही नहीं। और उसके बाद दुनिया से ये बात करनी थी कि अब पाकिस्तान को रिकन्स्ट्रक्शन करना, एक $30 बिलियन का नुकसान है, उसके बारे में फंडिंग के क्या चाराजोई हो सकती है। दुनिया भर से एड आती है, अमेरिका से एड आती है, चीन से एड आती है। अमेरिका तो खैर अपनी खुद तरीके से बांटता है, बहुत सारे ममालिक खुद ही बांटते हैं, हमारा उससे कोई वो नहीं होता। हम उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज दे देते हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी वगैरह दे देते हैं, बाकी वो खुद बांट रहे होते हैं। झूठ भी होता है कि ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। कोई एक तस्वीर आ गई थी किसी एक UK एड का, जब UK से तो मैं आटा आया भी नहीं था। तो लेकिन सच्ची बात है कि ये कंप्लेंट है और लेजिटिमेट कंप्लेंट है कि तरसील उस स्पीड से नहीं हो रही जिस चीज़ की ज़रूरत है। ये कंप्लेंट बिल्कुल मैं मानता हूँ है, लेकिन ये करप्शन की कंप्लेंट इसमें झूठी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी देखेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसहाक डार बीमार थे या कोई और मसला था। मुलजिम के वकील की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने की वजूहात बताते हुए इस्तदा की गई कि इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते सीधे अदालत पेश हो जाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि अफजल कुरैशी प्रोसिक्यूटर कहाँ है, जिस पर ड्यूटी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। मुखला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने का हुक्म सुनाते हुए कहा कि वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त ही होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। अदालत ने समाअत 7 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाबी पानी उतरने के बाद भी सूरत हाल संगीन है। मुतासिरीन में खुराक, साफ पानी और टेंट की सहूलियात न होने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है। बगैर मनसूबाबंदी के होने वाली इमदाद की तकसीम से कई गरीब और सफ़ेद पोश खानदान ताहाल इमदाद से महरूम है। भूख प्यास से इंसान तो इंसान जानवर भी मारे मारे फिर रहे हैं। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जाबाक हो गए, अमवात 310 हो गई। मुल्क में सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। कई रोज से जमा होने वाले पानी में मच्छरों की अफजाइश बढ़ने लगी। मलेरिया, डायरिया और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। सिंध के कई इलाकों में ताहाल पानी जमा है। काचू के सैकड़ों देहात का जोही से 40 रोज बाद भी जमीनी राब्ता मुनक़ता है। दादू में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। जिला में जाबहक अफराद की तादाद 23 हो गई। खैरपुर, नाथनशाह, फरीदाबाद और भान सईदाबाद के मकीन भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। 21 रोज बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। सिंध के दूर दराज इलाकों में मुतासिरीन को इमदादी सामान की फराहमी न होने से भूख और इफलास ने डेरे डाल रखे हैं। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के सैलाब मुतासिरीन भी गैस्ट्रो, मलेरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। जिलाई हेडक्वार्टर्स अस्पताल में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर मुयस्सर है और न ही अस्पताल में अद्वियात दस्तियाब हैं। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। ताहाल जमीनी राब्ते मुनक़ता हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सिपह सालार बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ बदीन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक सिपह सालार बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी सरगर्मियों का जायजा और रिलीफ में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक फजाइया के सैलाब मुतासिरीन के लिए तिबी इमदाद, रेस्क्यू और बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाक फजाइया हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। मुतासिरीन को खुश्क राशन और खुराक मुहैया की जा रही है।
मुल्क में खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। दिसंबर तक दस्तयाब चावल के ज़खायर मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का ये कहना है कि मुल्क में दाल मूंग की कोई किल्लत नहीं है। सबसे ज़्यादा खपत दाल चना की है, जो कि सालाना 8 लाख टन तक इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान ज़रूरत की 35% दाल चना खुद उगाता है, जबकि 65% ऑस्ट्रेलिया से दरामद की जाती है। NFRCC के मुताबिक धान की कटाई अक्टूबर में शुरू होगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार से दाल मसूर दरामद की जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार के मकीन भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में समाजी तंजीम के कैंप में अद्वियात, खुश्क राशन, बिस्तर के अलावा दीगर सामान भी जमा किया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ राहिल हसन F सेक्टर के इमदादी कैंप में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। राहिल, बताएगा सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए शहरी किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं? जी, मुल्क भर में आए सैलाब के बायस सैकड़ों अफराद जो है वो इस वक्त मुतासिर हैं और अपने घरों से बेघर हैं, जिनकी मदद के लिए जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर राशन इकट्ठा किया जा रहा है। और ना सिर्फ राशन बल्कि बर्तन इस्तेमाल के, उनके अलावा कपड़े और दीगर जो साजो सामान है, बिस्तर वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं। और डोनर्स हजरात भी बड़ी तादाद में जो है वो मुखैर हजरात जो है वो यहाँ पर आकर चीज़ें डोनेट करते हैं। लोग अपने घरों से कपड़े, बिस्तर और खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं और वो यहाँ पर डोनेशन देकर जाते हैं। मैं इस वक्त एक मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इन मस्जिद की इंतज़ामिया ने जो है वो राशन और दीगर चीज़ें इकट्ठा करना शुरू की हैं और वक्तन फ़वक्तन वो गाड़ी भर कर जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जाते हैं, चीज़ें वहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आकर बढ़ चढ़ कर अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हिस्सा डाल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। बात करें कुछ मौसम की तो शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर, मरी, कश्मीर, बल्दिस्तान के बाज़ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। दूसरी जानिब से बी नौखंडी भक्कर में शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद से अफसोसनाक खबर दें आपको, जहां चक शहजाद के इलाके में सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला को शौहर शाहनवाज ने कत्ल किया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि यह थाना चक शहजाद की हदूद है, यहाँ पर फार्म हाउस नंबर 46 में एक शख्स ने अपनी बीवी को बॉडी बिल्डिंग करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने डंबल वेट जो है वो सर में मारे और बेदर्दी से कत्ल किया है, जिसकी लाश यहाँ फार्म हाउस से मिली थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजम शाहनवाज जो है वो मारूफ सहाफी अयाज अमीर का साहबजादा बताया गया है। पुलिस की भारी नफरी फोरेंसिक टीमें और पुलिस के हुकाम मौका पर पहुंचे हैं और वकूआ पर जो शवाहिद मौजूद हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि लाश से फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे होने के बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मुलजम की गिरफ्तारी को अभी जाहिर नहीं किया जा रहा। पुलिस का ये कह रहे हैं कि मुलजम मौका से फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 2 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और उन्हें फौरी तौर पर रवाना किया जा रहा है मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अहलिया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को घर में कत्ल किया। कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई साल तक सजा काटता है। सियासत में धूस और धमकी किसी सूरत रवा नहीं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई साल के लिए सजा काट रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ऐसा ही है। आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हों। कोई शर्म, कोई हया है इमरान खान को? एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं
टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आवाम ने फैसले अपने सर लिए तो फैसले सड़कों पर होंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये लोग सवाए खैरात मांगने के कुछ नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं फ्लाइट मिस हो गई इसलिए वाशिंगटन लैंड किया। चेयरमैन PTI इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी, जल्द इंतखाबात होंगे। इनका खेल खत्म हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने 15 अक्टूबर तक की तारीख दी है, बार बार चीख रहा हूँ, 5-10 दिन का इजाफा मांगता हूँ, फैसले हो जाएंगे। आज खुद वजारत खारजा ने कहा कि NGO ने इसराइल में टूर अरेंज किया, जबकि सोशल मीडिया पहले कह चुका है कि जब शहबाज शरीफ का वहां जहाज लगा उसके साथ कतर में इसराइल का जहाज लगा हुआ था। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन हो। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि PDM की सारी जमातें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर लगी हुई हैं। हम मुखालफिन की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान में मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का यह कहना था कि पंजाब असम्बली को दीन के हवाले से रिकॉर्ड कानून साजी का एजाज़ हासिल है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के लिए जामे प्लान बनाया है। दूसरी जानिब मुखालफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं है। मुलाकात में मोनस इलाही भी मौजूद थे। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि कराची में आटा सस्ता हो गया। फ़ी किलो कीमत 125 से कम होकर 110 रुपये पर आ गई। सिंध भर के फ्लावर मिल्स को 56,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा जारी कर दिया गया। नैब से प्ली बारगेन करने वाले फ्लावर मिल्स को गंदम का कोटा नहीं मिलेगा। कोयटा में भी आटा सस्ता हो गया। कोयटा में सस्ता आटा फेयर प्राइस सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। शहर के 7 मुख्तलिफ मकामात पर सस्ता आटा सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 20 किलो आटे का थैला 1,399 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। आटे के हसूल के लिए मर्द और खवातीन की कतारें लग गईं। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Been badly affected, to console them and provide them some relief. But I'm here to tell the world what happened with us and with our people. It has been a result of unprecedented cloudburst induced by climate change. Therefore, it's none of our doing or our making. Our carbon emission is less than 1%. To be very exact, it's 0.8%, which is one of the lowest in the world. But we are rated as one of the most vulnerable countries. I mean, probably the first 10 countries are most vulnerable. And in these days, 33 million people have been affected. 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged, and hundreds and thousands partially damaged. How will this change the conversation at COP27 and your leadership at the G7? Well, I've spoken to leaders here yesterday and today. I was very happy to meet Secretary General today again, who visited Pakistan and saw this calamity with his own eyes. And he said, Prime Minister Sharif, it is unbelievable. I mean, he is a man who has been dedicating his life for humanitarian cause for many years. He said he has never seen this kind of climatic situation in his life, and the entire country looked like sea flowing all over
the provinces of Pakistan. Will this change the loss and damage debate? Yes, most definitely. Yesterday and today, leaders have touched this subject in their speeches. President Biden, I'm very grateful to him. He spoke about Pakistan and Pakistan's plight. Other leaders, President Tayyip Erdogan, President Macron, and many other leaders have discussed and openly said that Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. And this shows the intentions and sincerity of global leaders. But I think it should come very fast, because time is running and we are racing against time. Waterborne diseases, 3 million children exposed to these threats, malnutrition, diseases, temperatures, and all kinds of exposures, they are facing. And elderly people, they need blankets, they need food, children need baby food. Has the world done enough? What more can be done? What they've done is commendable, but it is far from meeting our needs. We cannot, do it alone. We cannot, cough out resources from our own pocket, which are already insufficient to meet our, pressing needs of ordinary life. We need additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient infrastructure, adaptation in agriculture, in housing, things will not come back to normal. And I need to put our economy back on trail. I need to put our millions of people back in their homes, busy again with ordinary life in agriculture, in industry, and getting jobs back. What are you telling international players looking at Pakistan right now, because there's a lot of concern about the debt obligations also coming up? Yep, exactly. We are going to have debt obligations next month and month after. And are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those in discussions right now? In the shape of epidemic. It's waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot, you have very friendly countries, all especially. Hell will break, I'm telling you. How comfortable are you with your foreign commitments to China, for example? They're 30% of your external debt. Well, I think, yes, Paris Club needs to give us moratorium. And once that is done, we will most definitely request our Chinese friends. And we have spoken to IMF, we have spoken to World Bank to arrange programs for immediate relief for these millions of people. It's very important. Please tell me, how on earth do you expect from us that we have just signed IMF agreement with very tough conditionalities? That means every month we have to tax petroleum, we have to tax electricity, and yet, rehabilitate millions of people who are shelterless,
rebuild their houses and send them back to the work in agriculture, in the industry, and start producing. How can that happen? You're talking about Can you please tell me? taxing Can this petroleum happen? as well. Can this happen? Prices continue to soar. Oil, food. Killing inflation, imported inflation. Because of tension around the world, oil prices have gone to a level which I had never imagined in my remotest imagination. It touched $120. Now it is hovering around $90 We're or hearing so. that some of that It is still cargo is exorbitant. also being diverted to places like Europe that are thirsty for energy. Are you seeing that happen on the ground? What's been Gas the is not impact? available now. We invite tenders. There's nothing in the tenders because gas is all purchased by Europe. And if we are not able to provide gas to warm people's houses during winter, and their stoves and their workplaces, universities and medical institutes, we'll be in deep trouble. We'll have more diseases, God forbid deaths. Does this the developed world expect from us, or they want to really extend their helping hand Mr. to Prime come to our Minister, rescue? what do you think of buying oil from Russia? Well, we have. I've spoken to Russian President Putin about the availability of gas, and he has promised me that he will most definitely look into this. There is no such commitment as yet, but we are also talking to them to buy wheat because there was shortage of wheat last year, and this year the land is not going to be ready for wheat sowing. So we'll have to, import additional tonnage of wheat, which is going to cost fortune and further add on our foreign exchange, very, very scarce resources. All this put together is a nightmare. Also because the Pakistan rupee is on a free fall right now. And a lot of it also coming from political uncertainty with your former Prime Minister Khan now asking for elections. What's the government going to do? Well, the country needs unity, harmony, reconciliation, peace with each other, brotherhood, fraternity, and I'm all for this. Our coalition government, I'm heading this coalition government. I have articulated this time and again today, before your cameras and talking to you, I would like to convey to all my friends in Pakistan, let's join hands together, let's unite, let's bury our differences, and let's discuss politics some other time. Today is the time to come together and serve the suffering humanity and our brothers and sisters, get them out of water and put them in safe places and pitch tents, put them in the tent, provide them with blankets, with medicine, with food, baby food. My appeal to all my Pakistani brothers and sisters, let's rise above our likes and dislikes. Let's bury our hatchet and let's move forward. And this is equally true about international community. My appeal to them, that please do hand holding for Pakistan. Today we have become victim of this climate change induced torrential rains. Tomorrow it could be somebody else victim of this. Do we want this, or do we want to stop this? Mr. Prime Minister, just finally, before I let you go, on that sentiment of unity, are we going to see any efforts from your administration on normalizing ties with India? Most definitely. I mean, we are neighbors. We're there to stay forever till this world is in place. I mean, the point is that if we are neighbors not by choice, we are there to stay forever. So it's up to us. The choice is ours to live like peaceful neighbors, or neighbors who keep on fighting with each other every now and then. I don't think this is an option. The only option is that have peace, so that we can save our resources to feed our people, promote education, health,
but that can come once we start talking to resolve our relations, to resolve our issues, problems. Kashmir is number one on the table. And if India wants to talk to us on that count, we are ready. But it takes two to tango. न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका ये कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हुए। सैलाब से तालीमी इदारे, अस्पताल, पुल, सड़कें, डैम सभी कुछ तबाह हो गया। पाकिस्तान का कार्बन गैसेस का अखराज 1% से भी कम है।